वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ सारे के सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ए के पार्ट। आधा पार्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। ट्रांजैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता दिया था। आज का दूसरा पॉइंट जो है वो है एक्सक्लूशन ऑफ डिस्काउंट्स। यहाँ पे देखिए आंसर लिखिए, एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल वैल्यू द टैक्स पेयर नीड्स टू एक्सक्लूड ऑल द डिस्काउंट्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई वेदर इट इज़ ए ट्रेड सप्लाई और ए प्री सप्लाई डिस्काउंट। फुल स्टॉप। हाउएवर, the discount provided post supply can also be executed at the time of valuation if the below mentioned two conditions are met। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कंडीशन है, इफ़ द डिस्काउंट इज गिवन एज पर द कंडीशन ऑफ द प्री सप्लाई एग्रीमेंट मेड बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर। दूसरा देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे ITC भी कहा जाता है, एप्लीकेबल टू सच ए डिस्काउंट इज रिवर्स्ड बाय द बायर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इंक्लूशंस एंड एक्सक्लूशंस इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से मार्क करके रखिए। 5A क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज अंडर GST। आंसर लिखिए, एग्जेम्प्टेड गुड्स अंडर GST। यहाँ पे देखिए, देयर इज ए लिस्ट ऑफ गुड्स व्हिच डू नॉट अट्रैक्ट GST एज रिकमेंडेड बाय द GST काउंसिल। फुल स्टॉप। द रीजंस फॉर ग्रांटिंग एक्सेम्पशन ऑन गुड्स माइट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 देखिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, पहला। नंबर 2, द एग्जेम्पशन इज एज पर द GST काउंसिल्स रिकमेंडेशन। Number 3, the exemption is granted by the government through a special order. And number 4, the exemption is allowed on specific goods through an official notification। उसके बाद देखिए, moreover there are two types of GST exemptions on goods. These are as follows। पहला देखिए absolute exemption। Under this type of exemption, the supply of specific types of goods would be exempted from GST without considering the details of the supplier or receiver and whether the good is supplied within or outside the state। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए कंडीशनल एग्जाम्पशन। अंडर दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पशन सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गुड्स वुड बी GST exempt सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर द GST एक्ट और एनी अमेंडमेंट और नोटिफिकेशन। उसके बाद देखिए एग्जेम्प्टेड सर्विसेज अंडर GST। जस्ट लाइक स्पेसिफिक गुड्स स्पेसिफिक सर्विसेज आर ऑल्सो GST exempt। देयर आर 3 types of supply of services which would qualify for GST exemption। These include the following। Number 1, supplies which have a 0% tax rate। Number 2, supplies which do not attract CGST or IGST due to the provision stated in a notification which amends either Section 11 of CGST Act or Section 6 of IGST Act। तीसरा देखिए, supplies which are defined under Section 2 subsection 78 of the GST Act which are not taxable। Since these types of supplies are GST exempt, any input tax credit which is applicable on these supplies would not be available to utilize or set off the GST liability। Moreover, even under supply of services there can be 2 types of GST exemptions which are as follows। Number 1, absolute exemption, conditional exemption। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन वेयर इन द सर्विसेज वुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम GST विदाउट एनी कंडीशंस। नंबर 2, कंडीशनल एग्जाम्पशन और पार्शियल एग्जाम्पशंस वेयर इन एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन ए कंडीशन। दिस कंडीशन स्टेट्स दैट इफ द सर्विस इज सप्लाइड इंटर स्टेट और इफ द सर्विस इज सप्लाइड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन टू एन अनरजिस्टर्ड वन, GST would be exempted if the total value of such supplies received by the registered person is not more than 5,000 per day। Through GST is applicable for all businesses and on the supply of goods and services, the above mentioned exemptions are available। These exemptions reduce the GST burden and help in the socio-economic development of the country। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस वीडियो सबको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और आपको सारे PDF नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे PDF नोट्स में वेरी रिजनेबल प्राइस में आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।